तस्य भासाय सर्वमिदं विभाति. Namaskar. Warm welcome from Indian Thyroid Society. I am Dr. Arunas Menon, Secretary of ITS. One of the common questions that we come across in thyroid treatment is whether one's weight gain is due to thyroid problem and why the weight doesn't come down despite our treatment. Similarly, there are sometimes concerns and questions about bone health in thyroid disorders, whether it is good or bad, and how does thyroid affect bones. As you know, weight gain is not determined only by your thyroid status. There are a number of other factors such as your nutrition, your physical activity, many medications that you take, your sleep. Similarly, when it comes to bones, there are other factors such as your diet, your tendency for falls, your age, and such factors which could affect your bone. So, thyroid disease could have an effect on both the weight and bones, but it is not the same for everyone. In this session, we hope to address this and clear the myths from the truths. And for this, we have a wonderful panel of experts led by Dr. Mohan Shenoy, who is a senior endocrinologist. And we have a panel comprising of eminent experts in this field: Dr. Pramila Kalra, Dr. Ashur Rastogi, Dr. Alankar Tiwari, and Dr. Bridge Terry. I hope you will join live and interact with us during this session so that we can spread the right message, and our interactions would lead to better thyroid care and better bone and metabolic health. Thank you. So good evening, everyone. Myself, Dr. Mohan Shenoy. I'm ITS Executive Committee member and Digital Convener. With me in this Facebook Live, we have got a distinguished panel of experts. First, I would like to welcome the ITS President, Indian Thyroid President, Dr. Major General Dr. Narendra Kotwal, sir. Welcome, sir. Thank you, Mohan. There is a Senior Consultant Endocrinologist, Panchkula Hospital, Haryana. And also joining us from Mumbai is the Indian Thyroid Society past president and also our distinguished speaker, Dr. Shashank Joshi, sir, who is professor and working at Lilavali Hospital in Mumbai. Sir is also the ITS IOTA representative. It gives great pride to welcome you, sir. Namaste. Namaste, sir. Also welcoming is Dr. Professor Ashur Rastogi, who is a senior consultant endocrinologist and a very distinguished speaker who is coming from PGI Chandigarh. He is an expert in the field of, domain expert in the field of bone disease and thyroid. So it gives me great pride to welcome you also to this Facebook interaction. Yeah. Thank you, Dr. Mohan, and good evening, everybody. Good evening, everyone. So with this, I would like to request Dr. Kotwal, sir, to please give us a welcome address to the audience who has joined us. Thank you, Dr. Mohan. It is my honor and privilege to welcome everyone to this public awareness program under the aegis of Indian Thyroid Society. And today's topic is an apt topic which has been chosen: thyroid metabolism, obesity, and bone health, a hidden fracture risk. I mean, it is really apt, and the awareness about this has to be there. We know that a thyroid gland is a small gland which secretes thyroid hormone, which has an effect on energy homeostasis, and it does affect the bone remodeling also. So in both hypothyroid disorders where osteoclastic activity is low, or in hyperthyroid disorders where osteoclastic activity is high, there is a fracture risk is there. So we have experts who are experts in thyroid diseases, metabolic bone diseases, and obesities, who would be discussing the various options and discussing the connection about these disorders. And I'm sure today's deliberation would help to create awareness about the skeletal health in thyroid disorders. And I'm sure that various aspects as far as screening is concerned, effect of nutrition, effect of muscle exercise, and who all should be screened, everything would be discussed in clinical terms and practical terms, and it is going to help everyone. Proper screening and awareness is very important to prevent fractures and to prevent disabilities and to have a strong Indians with strong bones. And with this, I'm sure that it is going to help all of us. Thank you, sir, for the very crisp and concise message.
I would also like to request Dr. Shashank sir, who has joined us, to please shed a few light on what is the importance of public in this, because we have so many people who are coming with so many medical queries, so many people who are skeptical about starting GLP-1, and so many people who are coming with bone mineral density reports done in a very difficult setup. So what is your take on how we should have a public initiative on such a very rare, because advocacy is important. I know you are a champion of advocacy for the patients. So please help us navigate that issue, sir. So first of all, thank you so much, Mohan, and congratulations to you and the entire digital team. We must congratulate Professor Narendra Kotwal for such a lucid and simple message. Who is our president-elect, Dr. Pramila Kalra, Dr. Professor Ashu Rastogi, who is going to really talk today. Fundamentally, you asked a very important question. We are all here for a single commitment. We are all here for people living with a thyroid disease, or people living with a bone health problem, or people living with some obesity. So our commitment is to people living with different diseases, and we need to address them with that. That's our first commitment. Secondly, Dr. Kotwal sir has very nicely intertwined the relationship between thyroid, bone health, obesity, and muscle mass. And we are in a GLP-1 era. We know that traditionally hypothyroidism, that is where thyroid gland doesn't work appropriately, we give thyroxine for life. But one of the problems by giving thyroxine for life is it causes a high turnover osteoporosis. And we are, despite of plenty of sunlight, we are D deficient and calcium deficient nation. So we need appropriate calcium and vitamin D on board through either food sources or through nutraceutical sources. We need to do strength training exercises. And strength training is important to build muscle building. And that's very important even in thyroid disorders, so that we don't gain weight. You made a passing remark about GLP-1. GLP-1 and thyroid have a unique link. We know that all people with GLP-1, in animal studies, they had to screen them for thyroid nodules because there is a rare link with medullary thyroid cancer and multiple endocrine neoplasia syndromes. So before we start anybody on GLP-1 therapy, normally we rule for gallstones, we look for pancreatic diseases, we look for gastroparesis, but we also look for thyroid nodules. So that's important to screen them. Number two is that whenever we give GLP-1 receptor agents with fat loss, we also get muscle mass loss and also bone loss. And therefore, when somebody is on GLP-1 agent, we need to do muscle strengthening exercises. Muscle strengthening exercises, they will preserve the muscle mass and the bone both. So I think bone health, muscle mass is the key in general health, and thyroid, obesity, bone health connection, which this webinar aims, is very unique. I congratulate the entire team of Indian Thyroid Society and Dr. Mohan Shenoy in particular, who has been simply outstanding in his social media outreach. I think, Mohan, you do a fantastic job. And I also should congratulate Professor Narendra Kotwal for his pearls of wisdom in not only just for medical doctors, but also for lay people. He has been constantly writing, and also he has got a spiritual touch to it. So, his pearls of wisdom are magnificent, and we all look forward to them in the various newspapers in local languages. So congratulations to all of you all. And I'm looking forward to this wonderful webinar where we will have deliberations from domain experts. Remember, experts for thyroid diseases are called endocrinologists, and they are the domain experts who treat thyroid disorders. So whenever there's a thyroid disorder, you should listen to people who are endocrinologists. They are your one-stop shop to ensure that all information is there. We are living in an AI-enabled world, but remember that there is a lot of hallucination in the AI. There's a lot of clutter out there on the internet. So we should be cautious and careful, and we should go to domain experts who are endocrinologists. This team, which is, all of us are qualified as endocrinologists who are experts of thyroid. Thank you so much, and Jai Hind. Thank you, sir. So I will continue with the webinar, and first question I'll ask to Dr. Ashu Rastogi. Sir, you are very good in this research aspects of thyroid and bone. So what is your take on recognizing and preventing the next fracture? Because some person with obesity comes to me with thyroid dysfunction, sustains a fragility fracture. So what is your approach? How will you assess the future fragility risk? Because I know that you can all tell that obesity can give a false reassuring BMD result. So what will you tell to our patient who is asking this to you in the clinic, sir? Exactly. So first we should know, the audience should know that what is the fragility fracture, because fracture can occur even after trauma. But somebody who develops a fracture with a minimal trauma, that means these are warning signs. Something is wrong with the bones of that person. So a fragility fracture itself is a warning sign, and you might not rely on like those tests like DEXA scans that is routinely done. And the T-scores might be false in this case. And especially you mentioned that this patient might be obese, he might have some thyroid disorder. So in that scenario, you can have a BMD which might be falsely reassuring, but still the patient is having fracture. So in this scenario, you have to reassess the patient as a whole. First, you have to look at what kind of thyroid disorder the patient is having. And as nicely alluded by Dr. Kotwal also, that patient can have hyperthyroidism or hypothyroidism, but either of the scenario, the patient is at high risk of fracture. So look on the patient's records, what he's receiving, whether the patient's thyroid control is fine or not, or whether he is being overtreated.
look at the calcium status, the vitamin D status, and very importantly, the renal function status in these individuals who are obese, having thyroid disorders, maybe sarcopenia, and also prior history of falls or prior history of other vertebral fractures. But in addition to the DEXA, now we have certain other tools which can be easily done by a simple DEXA machine itself, and they're readily available. If you ask your doctor that in addition to a DEXA report, can I have something if the DEXA is normal? Can you tell me whether I am at a risk of fracture? Yes, the answer is yes, and this is called a trabecular bone scores. So you do not need a hi-fi machine for that. It's a simple DEXA machine with a simple software. It gives you some values, and that tells you that despite a normal BMD in a patient who is obese, you can have a poor microarchitecture of the bone. That is, the quality of the bones might be poor. And this is a very simple complementary tool. And somebody is having a TBS which is less than 1.25. That means this patient is having an increased risk of fracture and will need treatment. There are some other tools also which your doctor can also tell you, especially the endocrinologist, as Dr. Shashank was mentioning, will know that these tools are called SCORE tools or a OSTA tool, which is again a simple osteoporotic screening tools which can tell that who are at risk of fracture despite a normal BMD. But yes, coming from a research institute, we also have other modalities which can tell increased risk of fracture despite a normal BMD, like HRPQ-CT, but is mainly related to the research tools. But it is very important to understand for you that sometimes T-score can be false. If you already have a fracture, be in mind that you are at very high risk of a recurrent fractures and you need an evaluation by an endocrinologist as soon as possible. Thank you for that, very important, and because public health is our responsibility. We are all trained in endocrinology, but our role is beyond. We should go to families and communities in this program. Thank you for that answer. Sir, Dr. Kotwal, sir, it's a very important, pertinent issue because now Dr. Ashu has told about fractures and all, but people will be scared. When should they start screening? Because some person doesn't know about what is a thyroid, what is a bone health. So how should it begin and how early should we do? Can children also have fractures with the thyroid? So is it quite early onset or are there any risk factors particularly for that, sir? See, as Dr. Ashu has clearly pointed out that even with the normal BMD, normal bone density, one can have the fracture because that depends upon the quality of the bone, and quality of the bone can be assessed by the various tools as has been already stated. Now the question comes, when should we assess particular individual for fragility fracture? We should assess for the bone density in a thyroid disorders. Firstly, when should we have thyroid disorders assessment? Generally, if somebody has a family history of thyroid disorders, if somebody has got a goiter, there's an autoimmune disease, or somebody is taking medications which can interfere with the thyroid. So in those patients, we should do the thyroid function test. Having said that, now, as was pointed out earlier also, in hypothyroidism also and in hyperthyroidism also, there is a problem with the skeletal health. Especially in hyperthyroidism disorders and elderly person, postmenopausal ladies, even if T3, T4 is normal and TSH is slightly suppressed, they are at the risk of bone loss. So these are the individual where we should assess their bone density. But generally, as per the ICBMR guidelines, bone density should be done in ladies at 60 years, in males at 65 years in Indian setting. But if somebody is having a risk factor for the bone loss, like somebody is on drugs like steroids, somebody is having chronic inflammatory disorders, lean and thin, early premature ovarian insufficiency, or somebody having amenorrhea, or somebody losing a lot of weight, these are the individuals where bone assessment should be done earlier than the cutoff whatever, that 60 or 65 years. But if somebody is having thyroid disorder, especially hyperthyroidism, in those there is going to be bone loss. So we should assess their skeletal health in terms of the bone density, which is the commonest. But if we want to assess the quality, then there are other tools which can be employed. Thank you, sir, for that very important and crisp message. Dr. Ashu, sir, there is a question like people ask us, thyroid, vitamin D, nutrition. So these are the foundation for any disease. So because before we go to treatment per se, so because medicines are there, but how can we continue the therapy? Because thyroid does not need much nutritional support. But for a bone disease which is happening, what is the importance of this channel? Because thyroid, vitamin D, nutrition. Because do we have to have a nutrition advice for all these things, or can we also give them some tips regarding this, sir? Absolutely. You're nailing the important aspect of the treatment of osteoporosis, because we should understand that bone is an organ that is made up of calcium, that is made up of the proteins, and almost 50% of the bone is made up of proteins, and the organic matrix constitute the more, and then comes the calcium. So in a patient who is having weak bones, that we call osteoporosis, we have to take care of all the three aspects, that is a triad of vitamin D, calcium, and protein, along with definitely if the patient is having a thyroid disorder, the optimal thyroid replacement.
So very important is first to understand the dietary calcium intake of a person, what he's taking in his routine diet, because it is usually required that we require 800 to 1000 milligram per day of calcium. And the best calcium is that is there in the diet, which is readily available and which has a very high bioavailability. Only once it is deficient and you estimate by the diet of a patient, then you start supplementing with the calcium tablets. So people just pop up calcium tablets like anything, but the dietary calcium is always very important. They can take this calcium either in the vegetarian diet, like it may be present in the tofu, like soya products, like legumes, like beans, which can be included maybe at the time of breakfast or even some lunch. They can include these, which are very rich in calcium and provide a good RDA. But if the patient is having relative deficiency of these micronutrients, then you can, because we know that in Indian diet, there are a lot of phytates, and phytates just bind to the calcium and it prevents the absorption of the calcium from the diet. Therefore, supplementation is required. Now, what kind of supplementation? You can give calcium citrate, you can give calcium carbonate. But remember that calcium citrate tablets are very readily available, but they require a low gastric acid. So it usually required to be given fasting. But now this patient might be receiving some tablets like thyroid tablets during the fasting time. So there is a golden rule that is called a 4-hour rule. You should not take calcium tablets within 4 hours of thyroid tablets. So if you are taking thyroid tablet in the morning, kindly have at least 4-hour gap before you take a calcium tablet. So the best way out is giving a calcium carbonate. Calcium carbonate is also very readily available, is cheap, and just it needs food for absorption. So it can be taken along with the food, and it provides a good amount of calcium, which is there in the RDA. Moreover, this calcium tablet should be given in divided doses, not more than 500 milligram per day. Another aspect would be, as you rightly mentioned, is vitamin D. That is the second pillar of this therapy of this triad. So try to maintain a vitamin D of more than 30 nanogram per ml, which has been shown in many studies that it is good for skeletal health. Now, this is also important that vitamin D is present in milk products. And now, even in India, we have the milk which is fortified with vitamin D. But still, you need to give vitamin D at least 1000 to 2000 international units per day. And many of these calcium tablets also have vitamin D, which provides the good amount of vitamin D. And in addition to the vitamin D, try to reduce the salt content, because salt is a killer for the bones. In addition to the other metabolic disease, but reduce the salt content because it replaces the calcium which is present in the bone. And the last pillar, as you rightly mentioned, Dr. Mohan, is a protein intake. And protein intake should be at least 1 to 1.2 gram per day. And probably it should be a good quality protein, which can be a vegetarian protein, and which can be a dairy products, or it can be like eggs and fish. And the last, I would say, these all three pillars rest on a backbone of resistant training. So if a patient is having a weak bones on top of a thyroid disorder, just focus upon a small time about fall prevention, the balance, the gait training, the weight bearing exercise that also prevent the risk of fall. So exercise is also important for dynamic stability and prevent the risk of fractures in these individuals. Thank you very much. So it's very important that public out there does not get any scared. Sir, any points from you, sir? Yeah, Dr. Mohan, at the point which Dr. Ashu made through this live telecast, I would like to re-emphasize to the public about the salt intake, which Dr. Ashu has really emphatically told you. We Indians take so much of salt. Our salt intake is so high in terms of achar, papad, and so many things. As a result, it is creating our weak bones. It is creating the epidemic of hypertension and so many metabolic disorders. So my plea to everyone, whosoever is attending this webinar, is to decrease your salt intake. And of course, two white things, salt and sugar, both should be optimally taken. Sir, the question is also to you, because people are asking us, people with coexisting thyroid disease and obesity, how should they be followed up comprehensively? Because there are so many people who tell that you can visit a physician also. But from your endocrinology perspective, for a person who's asking this, because we are all trained in metabolic disorders, because metabolism is one condition which everybody wants to know from. So because now AIMS and other institutes are making our degree also, diabetes, endocrinology, and metabolism. So I would like to know from you, what is the assessment, how we should get this comprehensively screened? This is very important, as Dr. Shashank Joshi had pointed out. Who is the metabolic physician? Who deals with the metabolism? It is the endocrinologist who are trained to deal with the metabolic disorders. Now, your question, that thyroid disorders and obesity. Firstly, in thyroid disorders, as far as hypothyroidism is concerned, yes, there is a small weight gain is there, which is because of the multifactorial, like resting expenditure is less. Or in frank hypothyroidism, there is a weight gain, which is not more than 10% of the actual weight, because that is because of the water collection. And somebody is taking treatment, it becomes normal. Now, question, if somebody is obese and hypothyroid, how we should
should assess. Firstly, whenever we start any levothyroxine tablets, it takes about 6 weeks for the 6 half-lives for the TSH to become normal. So repeat thyroid hormone assessment, TSH assessment should be done minimum after 6 weeks, not before 6 weeks, unless it's a pregnancy or in children where we want that rapid euthyroidism should be attained. In generally, after 6 weeks, you repeat your TSH. If TSH is normal, then maybe after 6 months or annually, it should be done periodically. But one should remember that weight loss, if we say because of the levothyroxine, will not occur. If somebody is obese, in obesity, what is the weight due to? It is because of the adiposopathy, which is intake versus output or energy disbalance. So we have to give the drugs to tackle that. Thyroid hormone replacement would not cause weight loss in an obese individual, which is adiposopathy. Thank you very much. I think very clearly mentioned that adiposopathy is one of the obesity's new name. It's ABCD, adiposity-based chronic disease. So obesity is also a disease. Thank you for highlighting that point. I think now we are coming to the close of the initial part of the webinar. So I want to ask Dr. Ashura Stogi, sir, from your experience, because people are asking us question on what should be offered to a person with a fracture, or what is the best medicine which we can give. Pharmacotherapy is not their idea. So some person checks the internet and finds out something. What according to you is the right way to go about? That is, and there are two things: anti-resorptive and anabolic therapy. So for a person who's curious, who has read about it, public is also reading just books like we do. So what is your take on how we can tell the patient or public who's inquisitive about this? Anti-obesity molecules also there. But regarding fracture, what is the point about obesity, what you call osteoporosis management, like anti-obesity, anti-resorptive management and anabolic therapy? Yeah. Absolutely. So we as endocrinologists treat osteoporosis and mainly with 2 classes of drugs. And these are known as anabolic therapies and anti-resorptives. So anabolic means which is stimulating your bone formation, and anti-resorptive is which is inhibiting the bone to degrade. That is called anti-resorptives. Now it depends upon the choice, which should be used first and which should be used later. So if a patient already has a fracture, that means he is at very high risk of a recurrent fractures, and independent of T-score, it is advisable that preferably anabolic therapy should be used. Now, what are anabolic therapy? There are mainly 3 types of anabolic therapy. Now they are very well available in India. At least 2 are readily available. So if you read the internet, romosozumab is an anabolic therapy, which is injectable, and another therapy is teriparatide, which is again an injectable therapy. Now, both of these drugs have been well proven that they will increase your bone mineral density, and also it will reduce the risk of fractures. Now, fracture are mainly 2 main type of fracture that occur. One is at the vertebra, because that is life limiting and that will prevent a person to walk. And second is hip fractures also. And therefore, most of the guidelines assess the fracture risk based upon the evaluation of these 2 areas. So you might have seen a DEXA report. Somebody is coming with a T-score of less than -3.5. That means these are very poor bones, especially at hip and the vertebra, where these T-scores are obtained. So in this scenario, you can use romosozumab or teriparatide, but it should be a goal-directed therapy. Patient has to be taken in the confidence. Sit with the patient, tell him that I am giving a drug, this is injectable, and this can increase your BMD by at least 6 to 8%, which can prevent fracture for teriparatide, and it can increase your BMD by 12 to 15%, and that can also prevent fractures. But it's very important that both of these anabolic therapies are duration dependent. Like they cannot be offered for more than 2 years. But we know that now a patient who suppose has a fracture at 55 years of age, he'll have 20-25 years of his life. What to give to prevent further risk of fracture? So most of the time, these anabolic therapies are supported after 1 year for romosozumab and 2 years for teriparatide with anti-resorptive therapy. Now, what kind of anti-resorptive therapies are available in Indian markets? One is an oral drug, that is alendronate, or injectable, that is zoledronate, which is given by a IV infusion by your endocrinologist, or a simple subcutaneous injection, that is denosumab. So any of these can be given that have been shown to improve the hip BMD and reduce the risk of fractures. Suppose the patient does not have fracture. So before concluding on, I just want to say, this is a more common scenario. Patient will not have fracture, but just they will come to a doctor or endocrinologist with a T-score or Z-score report. So preferably the anti-resorptives are preferred because we have evidence for more than 10 to 15 years with anti-resorptives. So they can be safely offered by an endocrinologist, and they will definitely increase BMD. But recurrent evaluation for the risk of fractures after 2 years, 4 years, 6 years, and 10 years is required. That how long the patient will require these therapies. But you need a proper consultation with an endocrinologist for the treatment of bones to prevent fractures. Thank you very much. I really like your way that very simple and a good explainer, because I think people know information all around us, and these molecules are quite available for many years, so very crisply put across. So I think we are coming to the conclusion. I would like to take feedback from both of you, Kotwal sir and Ashu sir, regarding take home. Well, like we all summarized very well, but what is the crux issue that we are facing more? Is it thyroid or is it obesity?
You know that obesity right now has taken, it's taken we are seeing children who are obese, ladies who are obese, young individuals who are obese, and elderly who are obese. And not only obesity, now we have a problem of sarcopenic obesity. We are the people who have more fat around our belly and have less muscles. So I think sarcopenic, less muscle mass and more obesity is quite prevalent. So I would exhort upon everyone to be careful about their diet and must exercise, as Dr. Ashu told, resistance exercises, good diet, high protein intake, resistant exercises, low salt, low sugar. I think that is the way to go about. Thank you, sir. And Ashura, what is the importance of fracture prevention? Because thyroid patient doesn't know about this. From this episode, I think they will be aware. What is your take home regarding how can they prevent the fracture? Yeah, bone is one of the largest organ and it is affected by the thyroid disorders also. So if somebody is having thyroid disorders, kindly ask your endocrinologist, please evaluate my bone, and they are more likely to be affected. And if they are affected, you can get your treatment from your endocrinologist in form of calcium, vitamin D, a guide about resistant exercise, and also some pharmacotherapies, maybe anabolics or antiresorptives. But yes, thyroid do affect bone and they need your care. Thank you very much. So I think we have come to the end of the first part of discussion. So we'll look forward to the second and we'll go forward with the discussions. Thank you very much. So we'll stay connected. Jai Hind. Thank you. Good evening, everyone. Continuing from the previous discussions which we had with Dr. Ashu Rastogi and Dr. Arun Menon, I am very fortunate to continue discussions with the esteemed team of experts here. We are doing the ITS, Facebook and YouTube live today. And today we have with us three eminent faculty who are also ITS members. First, we have Professor Pramila Kalra ma'am. She is the President-elect of Indian Thyroid Society. Madam is also the in-charge and Professor of Endocrinology at MS Ramaya Institute of Endocrinology at Bangalore. Welcome, Madam. Thank you. Also, we have with us joining in the team is Dr. Alankar Tiwari, who is a very good friend of mine, a senior consultant endocrinologist at Alankar's Diabetes Center at Varanasi, which is in UP. Welcome, Dr. Alankar. Thank you, sir. To complete the panel, we have with us our own Dr. Brish Teli, who is from Rajkot. He is having his own center, Dr. Bridges Granthi Endocrine Clinic at Rajkot. So, Dr. Ji, यहाँ पे बहुत ज़्यादा questions आ गए हैं आज. We are discussing about the thyroid, the health of the patient's metabolism, also regarding the bone health and obesity. ये तीन बहुत important problems है आज के दिन का. So, Dr. Pramila ma'am, I want to ask you the first question, which patients often ask us. Mild TSH is there. That is, the TSH is increased more than 5 in a person with obesity. How can you explain this? Because hypothyroidism, can it cause obesity? And one second part is that, is it potentially reversible? And does everybody require this medicine called thyroxine? So, yeah, this question is very pertinent and very important because क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स का TSH बॉर्डरलाइन पे होता है, वो हम लोग के पास आते हैं और वो सोचते हैं कि उनका जितना भी वेट गेन हो रहा है 10 किलो 15 किलो वो सब उसकी वजह से है. So the first thing we have to understand that any borderline TSH elevation within 10 cannot cause much weight gain. It can hardly cause 800 grams of weight gain, which is very, very less. That means 0.8 kg and not more than that at all. And that is the maximum. So any other amount of weight gain which has happened is not because of the thyroid. On the contrary, the other thing is true. तो होता क्या है कि जब हमारा weight gain होता है तो हमारी बॉडी कुछ कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स करती है. तो उसमें से एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है कि बॉडी हमारे TSH लेवल को बढ़ाने लगती है जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाए. तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा TSH हल्का सा बढ़ जाता है. तो सपोज somebody is normal TSH is 4.5, it may become 5.56. So that is just a compensatory mechanism of the body when the obesity happens or when the weight gain happens in the body. And this is just the body is trying to bring the metabolism back to normal. So we don't have to treat that. So if a person has subclinical hypothyroidism, most of the times that may not cause weight gain at all or hardly very less amount like 0.8 kg as I told you. And the rest of the weight gain is not because of that. On the contrary, the weight gain itself can raise TSH a little bit. But there are some indications where a borderline TSH might need treatment. Suppose a woman is planning for pregnancy. So that's an absolute indication where all women who have TSH beyond 4, we have to treat. But all other cases, these are not the definite indications for treatment. There may be some other indications like if somebody has a family history of thyroid problem, if they have a goiter, उनको TPO positivity है और हमको लग रहा है कि जो उनके बॉडी में और चेंजेस हैं जैसे उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और कोई कारण नहीं है और वो इसी की वजह से है या विमेन में कोई इनफर्टिलिटी है, reproductive issues हैं या periods issues हैं, then we might treat such cases. But in all other cases, we wait. Why we wait? क्योंकि कई बार ये जो TSH borderline बढ़ जाता है
ये अपने आप थोड़े समय में नॉर्मलाइज भी हो जाता है। तो इसीलिए इस तरह के केसेस में व्हाट वी डू इज कि हम उनको फॉलो करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ सेट इंडिकेशंस है जहां हमको ट्रीटमेंट करना ही करना है, जैसे कि प्रेगनेंसी अगर है, या कोई वुमेन प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, या कोई आईवीएफ पेशेंट प्लान कर रही है, तब तो ट्रीट करना है। बट बाकी सब केसेस में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि टीएसएच को फॉलो करते हैं, और अगर टीएसएच ऑन फॉलो अप नॉर्मल नहीं हो रहा है तब हम उसको ट्रीट करते हैं, और अगर वो नॉर्मलाइज हो जाता है तो फिर हम उसको ट्रीट नहीं करते। और कभी कभी अगर वो उतना ही बना रहता है तब भी हम उसको ट्रीट नहीं करते, क्योंकि सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म नॉर्मल केसेस में, बहुत सारे केसेस में ट्रीट नहीं करना होता। एक आध और इंडिकेशंस हैं, जैसे कभी किसी को मेमोरी इश्यूज हो रहे हैं और कोई ऑब्वियस कॉज नहीं दिख रहा है, और जैसा मैंने बताया टीपीओ पॉजिटिव है और उसका टीएसएच राइजिंग ट्रेंड में है, गोइटर है, तब हम कभी कभी ट्रीट करते हैं सब क्लिनिकल को भी। तो वो हर पेशेंट टू पेशेंट डिसाइड होता है किस पेशेंट को ट्रीट करना है। बट अगर किसी का वेट गेन हो रहा है और उसका टीएसएच थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो वी डोंट हैव टू ट्रीट इट। थैंक यू मैडम। आपने बहुत सरल तरीके से थायराइड विजिलेंस के बारे में बात किया है। थायराइड का बीमारी के लिए बेसिकली थायराइड का एक्सपर्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। उसके पास जब जाएंगे तो आपको ऐसा तरीके से काउंसलिंग भी मिलता है। ये हम डॉक्टर अलंकार जी से भी पूछेंगे। डॉक्टर अलंकार सर, कैसे हैं आप? बहुत ठीक है, बहुत खुश लग रहे हो। सो पीपल फील दैट दे हैव गॉट सब्सटेंशियल वेट लॉस वंस थायराइड बिकम्स नॉर्मल, TSH becomes normal. But why may they get it? Because despite control of thyroid, like madam told, they don't have this weight loss. So excessive weight may not be happy there. So as a person who is actually planning or going for obesity control also, what would you tell the patient? How would you counsel the patient in your clinic regarding how we can manage it better? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं इन ओपीडीज, लाइक थायराइड से वेट गेन। जैसा प्रबला मैडम ने भी बताया कि from hypothyroidism at max we can gain 2 to 3 kg at max with the highest TSH levels, और वो जैसे ही we initiate the treatment for the hypothyroidism 2 to 3 weeks में we lose that much weight, and that is mostly due to the retention of water and salt in our body. अब उसके बाद जो वेट बचता है that is our own weight. उसका कारण अलग अलग हो सकता है, mostly our nutrition, our lifestyle, our sleeping patterns, our genetics and other things. So एक बार thyroid के लिए हमने euthyroid status we have achieved after starting the treatment for hypothyroidism, then we need to treat the patient with for obesity as a distinct disease. Obesity अपने आप में disease है, ज्यादातर लोग इसको accept नहीं करते। So मैडम ने बोला हमेशा ये होता है कि वेट बढ़ रहा है, थायराइड चेक कराओ, थायराइड से ही सारा कुछ खेल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। थायराइड से सारा वेट नहीं, मैक्सिमम जैसे मैंने बोला 2 से 3 किलो, या बहुत वो तो रेयर केस में है मैक्सिमम 1 किलो, जैसे मैम ने 800 ग्राम बताया। बाकी का जो है दैट इज आवर ड्यू टू न्यूट्रिशन, आवर फिजिकल एक्टिविटी, जेनेटिक्स एंड अदर थिंग्स, एंड वी हैव टू ट्रीट दोज थिंग एज एन ओबेसिटी ट्रीटमेंट विद व्हाटएवर एविडेंस बेस्ड interventions we have. Perfectly good. So that is the summary from Dr. Alankar. Because weight जो थायराइड का होता है मे भी थोड़ा कम ही होता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारा जो जीवन का शैली होता है, हमारा जो फर्ज होता है काम करने का, सबका काम के लिए ताकत जो एनर्जी चाहिए थायराइड देता है। बाद में जो हिस्सा होता है हमारा पोषण या हमारा काम से जो एनर्जी करने का, एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। वेरी गुड आंसर। डॉक्टर ब्रिज, आपसे एक सवाल है। व्हेन ट्रीटिंग पीपल विद ओबेसिटी एंड दोस रिसीविंग थायरॉक्सिन, what changes would you implement when they go for a very important, अभी जो GLP-1 के जमाना आ रहा है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप भी मत लेना। सो इवन आफ्टर दैट GLP थेरेपी एंड बेरियाट्रिक सर्जरी पेशेंट्स, तो उनको आप क्या बात करेंगे थायराइड के डोज के बारे में, या कैसा वो करने के लिए आप अपने क्लिनिक में कैसे रीच आउट कर सकते हैं? Thank you, Mohan sir, for क्या a होता है wonderful question. GLP-1? In fact, क्या होता है GLP-1? yeah. So the problem these days is while addressing any obese patient, or while initiating GLP-1, just as Dr. Alankar sir mentioned, patient को पूरी सब बीमारी का कारण थायराइड ही लगेगा। मुझे थायराइड है, like anything and everything under the sun, they consider it due to thyroid. So it's a very pertinent discussion. So when a patient on levothyroxine, the patient is already hypothyroid and goes significant weight loss. मान लीजिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया, या तो वी आर इनिशिएटिंग GLP-1 receptor agonist, or say the patient is undergoing bariatric surgery. The levothyroxine requirement are dose dependent. So definitely they often decrease due to the reduced lean mass, and there is also an altered volume of distribution. Particularly in case of bariatric surgery, gastrointestinal transit time and the absorption both may be affected. However, if you do not just measure the weight and go on changing the dose, बहुत सारा फैक्टर्स है, एब्जॉर्प्शन काइनेटिक्स का इश्यू है, देयर इज सो मच पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन. So instead, whenever the patient undergoes any major weight loss, there may be associated
the food dynamics, food intake related issues. So we should always measure a TSH. So don't blindly change the dose. Case ka weight 20% कमाए तो let me reduce the dose based on whatever the formula we are using. So after a clinically significant weight loss, always measure a TSH. TSH check करना ही है 6 से 8 हफ्ते बाद. Or then based on the what are the biochemical parameters, what is the TSH level, we should offer an individualized therapy to the patient. Patient का खुद का physiology देख के उसका जीवन symptoms, उसका overall the patient parameter देख के we should take the call, and it should be always evidence guided by a laboratory estimation of TSH. वेरी गुड। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यही है, लेवोथायरॉक्सिन का इंडिविजुअलाइजेशन या पर्सनलाइजेशन एंड लेबोरेटरी गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, बल्कि जस्ट वेइंग स्केल से या जस्ट उसका सिम्टम से वैसा नहीं करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। तो हमारा अगले हिस्से में जाएंगे, राउंड नंबर 2 में जाएंगे। प्रमीणा मैडम को अभी बोन हेल्थ के बारे में बात करनी पड़ेगी मैम। तो प्रोफेसर कलरा मैम, व्हेन thyroid states are happening, which are the thyroid conditions which harm the bone? मतलब अभी पता है कि बोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द मसल ऑल्सो। तो अभी 3 प्रॉब्लम्स है। एक है ओवर्ट हाइपरथायरॉइडिज्म, बल्कि हाइपर मतलब टीएसएच बहुत कम हो गया है, मतलब मैक्सिमम T3 T4 भी हाई है। सेकेंड कंसम्पशन से सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉइड, मतलब थोड़ा थोड़ा टीएसएच कम है बट T3 T4 नॉर्मल है, और पेशेंट की तरफ से टीएसएच ज्यादा सप्रेस भी हो गया है। इन 3 कंडीशन में कौन सा कंडीशन में ज्यादा हमको होशियारी या ज्यादा हमको तैयारी करनी है, मतलब बोन हेल्थ? तो बोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द बिल्कुल सही पिक्चर बात है, नाउ। क्योंकि ये बहुत बड़ा लोगों को डाउट भी रहता है और कंफ्यूजन भी रहता है कि बोन हेल्थ और थायराइड का क्या रिलेशन है। तो हमको एक चीज इंपॉर्टेंट समझनी है कि जब भी थायराइड हमारा बॉडी में हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, जिसको कि हम थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं, अब वो किसी वजह से भी बढ़ सकता है। या तो वो बढ़ सकता है कि पेशेंट बाहर से गोली खा रहा है, उसकी वजह से लेवल्स बढ़ रहा है, या पेशेंट के अपनी बॉडी में हार्मोन ज्यादा बन रहा है, और वो या तो बहुत ज्यादा बन रहा है या वो थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है, जिसको आपने बोला कि सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म। तो इन सब में से, तीनों में से कोई भी कंडीशन में बोन को तो नुकसान होता है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि बोन टर्नओवर बढ़ता है, बोन बनती कम है और जाती और नुकसान ज्यादा होता है, वो डिस्ट्रॉय ज्यादा होती है, उसकी वजह से बोन्स वीक हो जाती हैं। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पेशेंट बहुत लंबे समय से थायराइड की गोली ले रहा है और ओवरडोज ले रहा है, तो उसकी बोन हेल्थ खराब हो सकती है। अगर पेशेंट को सब क्लिनिकल थायरोटॉक्सिकोसिस है किसी वजह से, जिसमें कि उसका थायराइड हार्मोन लेवल इतना ज्यादा नहीं है और उसका टीएसएच सप्रेस्ड है, तो उसमें भी उसकी बोन हेल्थ को नुकसान होता है। और सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म है बहुत लंबे समय से, और उसका T3 T4 हार्मोन लेवल्स बहुत बढ़ा हुआ है, और उसने उसका इलाज नहीं किया है, उसकी वजह से उसकी बोन हेल्थ कमजोर हो जाती है। इन सभी सिचुएशंस में क्या होता है कि बोन बहुत वीक हो जाती है और उसका फ्रैक्चर होने का चांस भी बढ़ जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ऐसे कोई भी मरीज हैं जो भी थायराइड की गोली बहुत लंबे समय से ओवरडोज ले रहे हैं ज्यादा, कभी भी अगर कोई पेशेंट नॉर्मल थायराइड हार्मोन लेवल लेता है, जो उसके डॉक्टर मॉनिटर कर रहे हैं, और उसका थायराइड लेवल नॉर्मल है और उसका टीएसएच नॉर्मल है, तो फिर हमको कोई परेशानी की बात नहीं है, वो उससे उसका बोन हेल्थ में कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वो अपनी तरफ से ओवरडोज लिया है या ले रहा है, तब उसको नुकसान हो सकता है। और थायराइड डिसऑर्डर, जिसमें कि थायराइड का हार्मोन बनने की, थायराइड उत्पत्ति ज्यादा होने लगती है या थायराइड ज्यादा बनने लगता है, उसमें हमको क्या करना पड़ता है कि उसमें हमको ये देखना पड़ता है कि हम थायराइड हार्मोन लेवल्स को नॉर्मल करें, और ऐसे पेशेंट्स को हमको बोन हेल्थ के लिए भी ट्रीटमेंट देना पड़ता है। हो सकता है हम उसमें कैल्शियम वगैरह कुछ गोली दें, जिससे कि उनकी बोन हेल्थ सुधर जाए, और उसको मॉनिटर भी करते हैं। और खास तौर से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसमें होता है, जैसे कि कोई ओल्ड लोग हैं, उसमें ज्यादा नुकसान हो जाता है बोन को, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बोन्स वीक होती हैं। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, जिन वुमेन का मेनोपॉज हो चुका है, उनकी बोन भी जल्दी वीक हो सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बेसलाइन बोन भी वीक होती है। और जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस है, मतलब ओल्ड लोगों को जिनकी बोन्स ऑलरेडी वीक हैं, उनकी बोन्स को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि थायराइड हार्मोन लेवल्स नॉर्मल मेंटेन किया जाए, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको साथ में कैल्शियम और विटामिन डी जो भी उसको जरूरत है वो दिया जाए, पर वो डॉक्टर डिसाइड करे। थैंक यू। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू डिस्कशंस। डॉक्टर अलंकार, रिगार्डिंग द बोन्स एंड द बॉडी, हमने एक सुना है कि एक नई चीज आ गई है, बॉडी कंपोजिशन। तो क्या आप अपने क्लिनिक में बॉडी कंपोजिशन रूटीनली करते हैं? और अभी जो तरीका मैडम ने बोला है, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो गया है हाइपरथायरॉइडिज्म का, तो वो क्या होता है, बोन का हेल्थ और फैट का रीगेन, तो कैसे हो उसको मैनेज कर सकते हैं? आपके क्लिनिक में आप क्या करते हैं, वो आपको श्रोताओं को जस्ट बोल दिए। जैसे मैडम ने बताया कि जो भी हाइपरथायराइड या थायरोटॉक्सिकोसिस के पेशेंट्स होते हैं, तो जैसे ही हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, वो बहुत रैपिडली वेट गेन
होना स्टार्ट हो जाता है पेशेंट का। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस वेट गेन इज नॉट क्लीन, आई मीन उसमें उनको मसल की जगह फैट वो लेने एक्यूमुलेट करने लगते हैं, वो बहुत ध्यान हमें देना उस चीज के लिए। तो उस पीरियड में जैसे ही हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, हमें पेशेंट को ये भी गाइड करना पड़ेगा कि व्हाट ही हैज टू टेक और व्हाट ही हैज टू टेक इन और रिगार्डिंग द फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो। तो न्यूट्रिशन उसको प्रॉपर रखनी पड़ेगी, प्रोटीन इनटेक बढ़ाना रहेगा पेशेंट को, साथ में एक्सरसाइजेस अलॉन्ग विथ एरोबिक एज वेल एज रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। और जैसे बोन के लिए मैम ने बताया कि बोन भी हमारी इफेक्ट होती है, बोन वीक हो सकती है ऐसे में। तो अगर हम कैल्शियम या विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देंगे एज पर द पेशेंट्स नीड, उसके साथ में पेशेंट को एक्सरसाइजेस स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइजेस एंड वेट ट्रेनिंग भी साथ में बताना पड़ेगा, जिससे कि उसकी बोन्स बोन्स का जो रिकवरी है इट विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस, नॉट वेरी फास्ट वन। ऑल्सो विल डिपेंड अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट एंड अदर रिस्क फैक्टर्स जो भी बेसलाइन फैक्टर्स हैं। तो बट पेशेंट को हमेशा ये गाइड करना है कि आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल गेन वेट बट दैट वेट विल नॉट बी अ गुड हेल्दी वेट। तो हमें फैट एक्यूमुलेट नहीं करना है। और बॉडी कॉम्पोजिशन का फिर यहाँ पे रोल भी आता है। ऐसे पेशेंट्स जो भी ओबीज हैं, जिनकी बीएमआई ज़्यादा हो रही है, उनको हम बॉडी कॉम्पोजिशन से एनालाइज कर सकते हैं कि उनमें विसरल फैट कितना है, मसल मास कितना है, और देन वी कैन गाइड द थेरेपी एंड ऑल थिंग अकॉर्डिंगली। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट ऑफ एनी हाइपरथायराइड पेशेंट। थैंक यू डॉक्टर अलंकार। सो अभी ये एपिसोड में इंपॉर्टेंट होती है ओबेसिटी भी। डॉक्टर तेली, अभी आपको पता होगा कि प्रीवियसली मोटापा को एक हेल्थी टाइप मानता था, लाइक ओबेसिटी वाज कंसिडर्ड प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज बोन डेंसिटी may be high. But now there are some data that it will happen that they will have fragility fracture. तो आपको बतानी पड़ेगी श्रोताओं को क्या क्या है ये हेल्थी ओबेसिटी और क्या है ये फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर, or what is your opinion regarding this condition called healthy obesity and fragility fractures? तो आई थिंक यू हैव मेड अ वेरी पर्टिनेंट पॉइंट सर। हमारे गुजरात में ऐसा मानता है कोई मोटा व्यक्ति है वो तंदुरुस्ती हेल्थ की निशानी है। सो यू नो इक्वेट्स द ओबेसिटी टू अ पर्सन बीइंग हेल्थियर। So it may be true. So if you look at the Lancet consensus, they have divided into two groups. One is the preclinical obesity and the clinical obesity. इसमें obesity से होने वाले सब लक्षण या तो कॉम्प्लिकेशन शुरू हो चुके हैं, that is preclinical obesity, clinical obesity. उसका जो पहले का फेज है, that is called preclinical obesity, where we do not have any complications at large. But ये जरूर ध्यान में रखना है कि आज का जो preclinical obesity patient है वो आगे चल के full blown obesity related कॉम्प्लिकेशन सब जटिलताएं लेने के लिए पूरी संभावना रहती है। तो दिस हैज बीन अ कॉमन मिसकंसेप्शन दैट हेवियर बॉडी इक्वेट्स टू अ स्ट्रॉन्गर स्केलेटन, पर्टिकुलरली मेंशनिंग अबाउट द बोन हेल्थ। तो द थिंग इज, उसका जो लॉजिक ऐसा है कि जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहता है ड्यू टू द हेवी वेट, दैट मैकेनिकल लोडिंग वाज सपोज्ड टू बी स्टिल सपोज्ड टू बी इंक्रीजिंग द बोन मिनरल डेंसिटी। हाउएवर दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। इट डज मे नॉट एक्चुअली ट्रांसलेट इनटू द बोन क्वालिटी। बोन डेंसिटी बढ़ना तो ऐसा नहीं मान सकते हम कि बोन का क्वालिटी और उसका जो अंदर का स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है इट में भी गुड। द वेरी रीजन फॉर दिस इज विसरल ओबेसिटी। विसरल ओबेसिटी दी हमारी आंतरिक जो अंग है उससे फरती जो चर्बी है, दैट लीड्स टू सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन व्हिच ड्राइव्स द बोन माइक्रो आर्किटेक्चर। Another thing is so many patients with obesity may have associated insulin resistance or diabetes. And diabetes may there is an accumulation of something called as advanced glycosylated end products, or that is something which leads to the brittlity of the bone or fragility of the bone. So this is one another part of the story. The third part of the story is association of sarcopenia. So now sarcopenic obesity is something very, very important. This sarcopenia along with obesity has very other association. पेशेंट का बैलेंस कम हो जाता है, द पेशेंट को गिरने का चांस संभावना ज्यादा हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर व्हिच इज कॉल्ड द फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर। दैट्स व्हाई we should definitely use the BMI or DEXA scan, but which should not over rely on that. We have to see the complete picture. We have to holistically integrate the body composition, the inflammatory markers, history of diabetes, sarcopenia, history of fall का history है या नहीं है, and then assess the overall clinical risk of a patient. थैंक यू। सो आई थिंक अभी जो भी हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से अभी जानकारी फैल रही है। सो नाउ विल गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन, राउंड 3। इसमें हम पूछेंगे मैडम से और आप दोनों से रिगार्डिंग हाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस थायराइड ओबेसिटी एंड द बोन पाथवे। मतलब थायराइड के जो भी है, मोटापा का जो भी है और बोन का जो भी है, वो उसको कैसे हम क्रॉस टॉक्स बोल सकते हैं। तो मैडम से पहले डॉक्टर परिमला मैडम से सवाल है। सो एक पेशेंट आई थी मेरे पास, एक पोस्ट मेनोपॉजल वुमन थी। शी वाज हैविंग 55 इयर्स ऑफ एज। मेनोपॉज उसको बंद हो गया था, मेंसेस बंद हो गया उसको 45 इयर्स में।
तो अभी वो ओबेसिटी के साथ आई थी, उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है, टीएसएच को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बट अभी तो सप्रेस हो गया है। तो मेरे पास सवाल ये आया था कि हाउ कैन यू ऑर्डर, बिकॉज वी हैव टू गो फॉर बोन ऑल दिस टेस्ट, हाउ विल वी मैनेज दिस थिंग, बिकॉज अभी एक और टेस्ट पूछना है, तो क्या करना है मैडम इस हालत में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स, जैसा मैंने बताया कि अगर वो थायराइड की गोली ले रहे हैं, उसको सही से मॉनिटर नहीं कर रहे, तो वो ओवरडोज भी हो सकती है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से लोग थायराइड की गोली की डोज बढ़ा देते हैं अपने आप, ये सोच के कि शायद उससे वजन कम होने में हेल्प हो, जो हमको कभी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसे कोई भी पेशेंट आते हैं जिनका थायराइड सप्रेस्ड है और उनको मोटापा भी है, तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि वो थायराइड की रिपोर्ट ऑथेंटिक है, उसको रिपीट करना है कि नहीं, या वो हम उससे सेटिस्फाइड हैं। अगर आप उस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड हैं, आपको लगता है कि वो ठीक है, तो फिर हमको ये भी देखना है कि कोई वो ऐसे मेडिसिन होते हैं कुछ जो थायराइड की रिपोर्ट में चेंज कर सकते हैं, जैसे कुछ हेयर फॉल की मेडिसिन या कुछ भी मेडिसिन होती हैं। तो वो सब मेडिसिन हमको चेक करनी होती हैं, क्योंकि कुछ मेडिसिन की वजह से भी कभी कभी थायराइड की रिपोर्ट ऐसी आती है। फिर हमको ये देखना है कि हाँ, ये पेशेंट जेन्युइनली ओवरडोज है थायराइड से, तो फिर हमको उसकी गोली की डोज पहले कम करनी होगी, अगर हमें कंफर्म है तो। और फिर उसके बाद उस गोली को सेट करना होगा। उसके बाद हमको ये देखना है कि पेशेंट के मोटापे का कारण क्या है। क्या वो सिर्फ न्यूट्रिशनल ओबेसिटी है, उनको डाइट एक्सरसाइज कितनी है उनकी, उनको और कोई दवाई की जरूरत है, या उनका कोई और भी कारण है मोटापे का। सपोज उनको आर्थराइटिस है, वो सही से एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, क्या रीजन है, वो सब भी देखना है। उसके अलावा हमको ये भी देखना है कि उनकी बोन हेल्थ का क्या इश्यू है, क्योंकि जैसा हमने अभी पहले डिस्कस किया, लाइक वी डिस्कस दैट इफ the patient is taking overdose of levothyroxine for a longer time, then they may have problems with their bone health as well. So क्योंकि ये लेडी जैसे 10 years post menopause है, तो हमको अभी जल्दी से बोन हेल्थ को इमीडिएटली ना देख के पहले उसमें विटामिन डी उनका देखना है, उनका कैल्शियम, वो सब देख के उसको सप्लीमेंट करना है, थायराइड की डोज कम करनी है अगर वो ओवरडोज है। फिर उनको फॉलो अप करना है। फिर कुछ महीनों बाद जब उनका विटामिन डी सही हो जाए, कैल्शियम इंटेक ठीक रहे, फिर हम उनकी बोन हेल्थ के लिए टेस्ट कर सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए देख सकते हैं। इमीडिएट अभी देखेंगे तो हमें कई फॉल्स रिपोर्ट्स भी आ सकती हैं, तो वो सब चेक करके ट्रीट करके फिर फॉलो करेंगे। साथ में उनको एक्सरसाइजेस भी बताएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, अगर वो मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करेंगी तो उनकी बोन हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। जैसे अभी डॉक्टर ब्रिज ने भी कहा कि सार्कोपीनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोटापा भले ही होता है, बट वो मोस्टली फैट होता है, वसा होता है, एंड इट इज नॉट मसल, तो मसल लॉस हो जाता है, तो वो भी हमको देखना है। और उसके साथ साथ और कुछ उनको है, जैसे कुछ उनकी डायबिटीज बढ़ रही है या उनको कोई शुगर बढ़ रहा है उनका, वो सब भी देखना है, क्योंकि मोटापे के साथ मेनोपॉज के बाद बहुत सी और भी परेशानियां आती हैं, जैसे शुगर और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम। तो वो ओबेसिटी के मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमको देखने हैं, कोई हार्ट का इश्यू तो नहीं है, वो सब भी चेक करना है। और उसके बाद फिर हम उनको फॉलो अप पे करके, फिर उसके बाद उनकी बोन हेल्थ और बाकी मेटाबॉलिक हेल्थ के ऊपर देख के वी विल फॉलो हर अप, and we will advise her about her lifestyle. We will advise her how to take the medications correctly. If she is not taking it properly, we will check how she is taking it, whether she is compliant with the medicine, whether she is taking overdose or doing what. That all we have to see. And as I told you, we also need to see if she is taking any other vitamins or medicines which can change the thyroid report. So all that I'll see, and then I'll follow up the lady and I'll see how she is doing, and then take a call about her bone health in the future follow up. But at this time, I will give her calcium and vitamin D supplements if needed. And also I'll monitor her metabolic problems as well for diabetes, dyslipidemia, and other things as well. Thank you. So very important message here, because just not a simple TSH thing, BMD, bone density भी देखना है, body composition देखना है, and patient should be told about the importance of follow up. Very nice points, ma'am. So अलंकार जी, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। अभी न्यूट्रिशन के बारे में आप वाराणसी में एक मीटिंग तो कर चुके हैं रिगार्डिंग हाउ ओबेसिटी एंड न्यूट्रिशन कैन बी इम्प्रूव्ड। आप इसका प्रेसिडेंट भी हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा श्रोताओं को कि अगर पेशेंट लूज होता है, वो फैट होता है या मसल का होता है, प्रोटीन्स, तो थायराइड भी उसका बीमारी है, वो इंटेंशनल वेट लॉस जो भी करते हैं, उसको क्या न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस है, वो थायराइड का बीमारी का पेशेंट को क्या जानना चाहिए, व्हाट शुड द पर्सन विद थायराइड पर्सन नो विद। Can you hear me? Yeah. Okay. Yes. So I just was my question, because the internet went away. Was my question clear to you? Like Yeah. nutrition and the bone health and the general aspects regarding obesity. Yeah. तो अगर कोई पेशेंट थायराइड पेशेंट है, वेदर हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड, तो सबसे, और साथ में ओबेसिटी भी है, तो सबसे पहले तो हमें उसका थायराइड स्टेट जो है उसको स्टेबल करना है, पेशेंट को यूथायराइड स्टेट में ले आना है। उसके बाद हमें उसकी ओबेसिटी पे फोकस करना है। और जहाँ तक वेट लॉस, रैपिड वेट लॉस वी शुड नॉट जनरली आस्क द पेशेंट टू
आप बहुत तेजी से अगर वेट लॉस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो फिर दिक्कत करती है, चाहे वो रैपिड वेट गेन हो चाहे रैपिड वेट लॉस हो, दोनों चीजें ठीक नहीं। फॉर न्यूट्रिशन, पेशेंट को पहले तो एक ट्रेंड न्यूट्रिशन डाइटिशियंस के अंडर में गाइडेंस में ही करना चाहिए। खुद से कोई क्रैश डाइट या ये सब नहीं चीजें फॉलो करनी चाहिए, बट दैट कुड बी डिट्रीमेंटल फॉर पेशेंट। तो एक डॉक्टर के साथ आप पहले थायराइड के अपने इसमें रहो, फिर ओबेसिटी ट्रीटमेंट में जाओ, साथ में एक स्ट्रेटजी फॉलो करो न्यूट्रिशन की। उसमें आपका जो सारे जो आपके पैरामीटर्स हैं, न्यूट्रिएंट्स, इट शुड बी इन अ वेरी ऑप्टिमम लेवल्स, चाहे आपका प्रोटीन हो, चाहे कार्ब्स हो, चाहे आपके मिनरल्स एंड वाइटामिन हो। तो उसी के साथ आप एक अपना फैट लूज करोगे और एक हेल्दी मसल जो है वो गेन करोगे। तो मसल गेन होते रहना चाहिए आपका। स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस वेरी जरूरी है, एरोबिक्स के साथ साथ आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है। दैट विल हेल्प बिल्ड अप योर मसल एज वेल एज योर बोन्स विल बिकम स्ट्रांग। चाहे डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के हो, चाहे एडल्ट्स हो चाहे एल्डरली पेशेंट्स हो, उनके हिसाब से हमें उन चीज़ों को इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा, उनकी एक्सरसाइज को भी और न्यूट्रिशन को, एज पर द पेशेंट्स नीड एंड एवरीथिंग। तो ये चीजें करनी है। साथ में पेशेंट के रूटीन को सेट करना, उसके स्लीप पैटर्न, कोई मेडिकेशन अगर वो और ले रहा है उसको देखना पड़ेगा। हाइपरटेंशन या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस साथ में है, उसको भी साथ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डाइट के बहुत ज्यादा स्ट्रेनस डाइट और स्ट्रिक्ट डाइटिंग करते हैं, दैट कैन हैम्पर योर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ऑल्सो, तो स्पेशली इन एल्डरलीज। तो ये चीजें नहीं करनी है। स्टेप वाइज आप चलोगे तो आप एक हेल्दी वेट लूज कर सकते हो, मसल गेन करोगे, साथ में फ्रेलिटी नहीं आएगी, आपकी जो मसल्स होंगे दैट विल बी स्ट्रांग, योर बोन्स विल बी स्ट्रांग, और आपका थायराइड स्टेट जो है वो भी आपका मेंटेन रहेगा। तो ये बहुत जरूरी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा विथ आपका थायराइड एज वेल एज आपका वेट एंड न्यूट्रिशन। लास्ट वन मोर क्वेश्चन टू डॉक्टर अलंकार। मेरा एक पेशेंट ने अभी मैसेज किया है रिगार्डिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बिकॉज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या पेशेंट्स ऑन थायरॉक्सिन थेरेपी और द एंटीथायराइड मेडिसिन, कैन द पर्सन गिव ब्लड आल्सो? बिकॉज मेटाबॉलिज्म का एपिसोड है, अभी लाइव में सवाल भी पूछने लगे हैं, तो आप वो उसका भी आप एक आंसर देंगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल, ये बहुत ही कई पेशेंट्स बहुत पूछते हैं, क्रूशियल पेशेंट की, कि भाई मैं थायराइड की दवा ले रहा हूँ डॉक्टर साहब, क्या मैं डोनेट कर सकता हूँ? तो सबसे पहले जो कॉमन चीज़ है हाइपोथायराइड, उसकी बात करते हैं। अगर हाइपोथायराइड का पेशेंट है, अगर वो पहले से दवाइयाँ ले रहा है और उसका पिछले 8 हफ्तों में थायराइड लेवल मेंटेन्ड है, कोई नया रूटीन, नया दवा उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं की गई है, देन ऑफ कोर्स ही कैन और शी कैन डोनेट ब्लड। और अगर उसकी दवा पहली बार शुरू हो रही, इनिशिएट हो रहा है ट्रीटमेंट, तो वी हैव टू वेट फॉर 4 weeks at least and let the TSH and FT4 levels maintain in the normal range. FT4 level should be in upper normal limit. It should be in upper normal limits, and then he or she can donate the blood. If patient is taking anti-thyroid medications, then there is he or she cannot donate blood for the last 2 years if he had taken anti-thyroid medication. वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। अभी मेडिसिन होता है डू नो हार्म टू एनीबडी, तो यही काम होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। हमारा ब्लड इनको भी नहीं हार्म करना है, हमको भी हार्म नहीं होना है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी ये एपिसोड कंक्लूड करने से पहले डॉक्टर ब्रिस्टेली, आपसे एक सवाल है। आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देना होगा पेशेंट्स को जो सुनने वाला है आज एपिसोड में, 3 पॉइंट्स क्या देंगे उनको ऐसे एडवाइस रिगार्डिंग दिस थायराइड, द बोन हेल्थ एंड द न्यूट्रिशन और द ओबेसिटी? क्या उसको देंगे? 3 पॉइंट्स तो देना चाहिए, क्या देंगे उनको? Firstly, a very wonderful discussion. I think in such a short time we covered so many important aspects. हमने बहुत सारे ऐसे थायराइड और ओबेसिटी, वेरी वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन, थायराइड, ओबेसिटी एंड बोन। तो कोई एक पेशेंट है जिसको we need to protect the thyroid part as well as the weight management हो रहा है, plus we want to preserve the bone mass. We can approach it in a 3-pillar strategy. First is precise endocrine control. पेशेंट का थायराइड लेवल पूरी तरह ठीक रखना है. Do not need to over treat or under treat. Because both have its own repercussions, because especially the over treatment may lead to bone depleting effects. So first thing, thyroid का regular report कराना है और पूरा thyroid ठीक से maintain करके रखना है. That is the first thing. Second is we need to optimize the body composition. What Alankar sir rightly mentioned, that rapid weight loss, rapid weight gain, दोनों का there are so much problem. Always the treatment of obesity has to be in a very very strategic, sustained, gradual manner. You need to follow the patient के साथ मिलके चलना है. It's a journey and it should be sustainable and it should be paired. दो चीज बहुत ही ज्यादा अगत्य का है. One is the protein intake and second is resistance training. डंबल उठाना है, वजन उठा रहा है. I tell in my patient, my OPD, घर पे डंबल नहीं है तो पानी का बोतल उठाओ, पानी का डोल उठाओ. So that is very very important part for balanced exercises. So exercise लोग बोलेंगे कि मैं तो इतना steps चलता हूँ, मैं पूरा दिन घर का काम करता हूँ. It's not enough. You have to specifically instruct the patient. You have to do weight lifting. That is important. उससे क्या होगा कि lean muscle mass से maintain होगा,
सार्कोपिनिया को हम प्रिवेंट कर पाएंगे, एंड इट विल इन टर्न हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ फॉल्स, सो फ्रैक्चर का रिस्क भी कम होगा. Last but not the least, I would like to focus, we talked about, DEXA. There are many challenges in implementation of DEXA. So we need to individualize the fracture risk assessment. So we need to use DEXA scan, although judiciously. And agar trabecular bone score ka option available hai, so definitely we should use it. That gives very much, precise or better information. Plus, as Dr. Pramila Madam mentioned, calcium and vitamin D. Any patient, most of our patients, we are deficit in vitamin D, so use it freely. Calcium and vitamin D, that will help in the preventing aspect of osteoporosis. Plus, do not delay the osteoporosis pharmacotherapy. आप किसी का fragility fracture और ये क्या fracture करके आ जाए तब उसको anti osteoporotic therapy, that doesn't make sense. So we need to use science, we need to follow science, and whenever clinically indicated, offer early anti osteoporotic therapy, pharmacotherapy, rather than waiting for a fragility factor to worsen. I think this three-pillared approach will be very much sufficient in clinical practice, and I hope it will make a difference. Yeah, thank you. थैंक यू डॉक्टर ब्रिज. इट वाज अ वेरी नाइस टाइम. मेरा तो 1 घंटा चला गया. अभी पहले साइड में तो कोटवाल सर और आशु सर ने बहुत अच्छी तरह से बैटिंग की. आपने भी बहुत ज्यादा बैटिंग एंड बॉलिंग की, तो मेरे खुशी ज्यादा बढ़ गई. तो मैं लास्ट एक कंक्लूडिंग मैसेज मैडम से लूंगा, बिकॉज अभी श्रोताओं का बहुत डिमांड है कि लास्ट पॉइंट जो भी है, क्या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का रोल है, बिकॉज एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आर वाइड स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री. सो क्या होता है, अभी इंडियन थायराइड सोसाइटी का प्रेसिडेंट अभी इलेक्ट है मैडम, तो मैडम आपका विजन क्या है और क्या पेशेंट्स को करनी चाहिए, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को क्या सोचने चाहिए, हाउ दे शुड अप्रोच द एंडोक्रिनोलॉजिस्ट रिगार्डिंग द थायराइड, एज सच जनरल एडवाइस रिगार्डिंग द पेशेंट्स हेल्थ? तो डॉक्टर मोहन, जैसा आपने सही बताया, हमने आज डिस्कस किया कि जो भी थायराइड के मरीज हैं वो अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो उनको सही ट्रीटमेंट बताएंगे कि उनको थायराइड की गोली की जरूरत है कि नहीं. अपने आप से दवाई ना लें, दवाई बढ़ाए घटाए ना करें, और साथ में आयोडाइज सॉल्ट का यूज करें. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश में बहुत मिसकंसेप्ट हो गए हैं और मिसकंसेप्शंस हैं इस बारे में कि हमको दूसरा कोई सॉल्ट लेना है, नहीं लेना चाहिए आयोडाइज सॉल्ट. गवर्नमेंट की स्कीम है आयोडाइज सॉल्ट की. दिस इज हेल्पफुल फॉर एवरीबडी. इसी से हमारे देश में जो आयोडीन की कमी थी वो ठीक हुई है, और इसीलिए आयोडाइज सॉल्ट का यूज करें. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जो भी छोटे बच्चे हैं उनका भी थायराइड जो जब वो पैदा होते हैं जरूर चेक करें, क्योंकि अभी जो चीज हो रही है कि कई बार छोटे बच्चे जिनको कंजेंटल हाइपोथायराइडिज्म होता है वो मिस हो जाते हैं, तो उनका भी थायराइड जरूर चेक होना चाहिए. वो एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, सब बच्चों का होना चाहिए. बर्थ के बाद तीसरे दिन पे हम लोग करते हैं. अगर बच्चा पहले डिस्चार्ज हो रहा है तो पहले करते हैं, और कॉर्ड ब्लड से भी आजकल हो रहा है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और दूसरी चीज, थायराइड हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, तो अगर उसका लेवल कम ज्यादा होता है तो उससे काफी परेशानी हो सकती है. इसलिए ना ज्यादा लेवल अच्छा है और ना कम लेवल. सो दोनों चीजों को ट्रीट करना है, और इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट करते हैं. आप उनके पास जा सकते हैं. Thank you very much. I think a very important messages today. I think the audience must have definitely have benefited. आपके जो भी सवाल है, please write to us on our YouTube and our Facebook and our website. We are available on here 24/7 listening to your questions. तो आपका जो भी है आप नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे. आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे. थैंक यू. जय हिंद. नमस्ते. अच्छा, जय हिंद. तस्य भास सर्व